Once they're confident that they will be okay, like Wasim will probably tell you, then you run it very hard. So it's not easy. It's not start for both the teams. So I think generally you tend to think, oh, batters will struggle because of the concentration situation, but even bowlers don't have it easy. Like even for us, it's not that easy. Swap and
Yeah, we have to take the warm-up game, and he was unbeaten in the previous one as
Hello, hi guys, good evening. हाँ तो गुड इवनिंग। Good evening, Rahul. हाय सर, गुड इवनिंग। Good evening, Rija. Good evening. सर। Good evening, Manshu. I hope you can see my screen, right? Yes. Okay, so yesterday we left at the material master creation. So let's again start with, material industry. Okay, so can anyone tell me what exactly were the views we have selected yesterday? Or finished good? Girija? Basic data 1, Yeah. Okay. 2, and sales organization data 1 and 2, 3, Mhm. and MRP 1, 2, 3, Mhm. 4, and work Mhm. scheduling, and quality management, Mhm. and accounting 1, 2, and costing 1, 2. That is for That's it? finished. Yes, sir. Sure about this? Anyone else? Any confusion, guys, or anything else we missed in this? No, sir. If it is raw material means purchasing, and we need to fix that purchasing order text to the if it is raw material means. Okay. And anything else you think we missed something, Girija? I think no, sir. Sure about that? Can you Yes, see sir. the views again, once again? Yes, yes. Okay. Anyone else? Maybe Bhagwat, Raju. General plan data. Okay. Good. So Girija, I think these two you missed actually. Okay. Okay. Okay, sir. So again, everything is common, but you rightly said purchasing and purchasing tax will be the one which we need for raw material, packaging material. Yes, sir. And which is we need to remove, Girija? Work scheduling view, sir. Exactly. Good. Very good. So okay, let's go ahead. That's very much clear. And here we understood that this is a structure. Org structure we call that. Okay. Organization structure. Okay. Yes, That's yes. the organization levels. Or we can say this is an enterprise structure. Same thing, just a different terms. Okay. Then again, the company code we have seen that we can create company code, then plant. Below the company code, we have plants. The plant can be, more than one plant can थोड़ा happen. हिंदी में explain करिए। Sorry. थोड़ा हिंदी में अच्छा हिंदी में explain करिए। ओके मैं दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि कंपनी कोड है, कंपनी कोड के नीचे देयर कैन बी मोर देन वन प्लांट्स। भाई हिंदी इंग्लिश इज ओके राइट? कंप्लीटली हिंदी बोलूं क्या, प्योरली बिल्कुल? थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश चलेगा ना? जी सर। ओके। सो कंपनी कोड है ना, तो कंपनी कोड के नीचे क्योंकि एक से ज्यादा प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन देयर कैन बी मोर देन वन प्लांट्स। ठीक है। एंड एक ही प्लांट के अंदर देयर कैन बी मोर देन वन स्टोरेज लोकेशन। Sir, why we are using 1710 particularly that plant number? Okay, let me tell you, Grija. So this one thing, actually, why I use this. So SAP, whenever SAP gives, this thing, system to everyone, okay? So Okay. SAP creates this plant as a standard plant in system, okay? Okay. SAP itself, like when SAP, can you see this standard storage ETC location? means that is 1000 only, sir. If it here we are using 1710. Oh, Right, okay. sir? So that yesterday we have seen that thing, yeah? Okay, No, okay. that was basically, this number can be given, Girija. We can give any number. Okay, This is okay. not necessary. So it is just that I don't know why SAP used the 1710 as the standard one. So, Okay. but let me tell you, let me showcase again to you here. Okay, let's go to this configuration. So for configuration, when we do know, so the Yeah. T code for that is SPRO. So guys, again, to repeat in Hindi, Yes, sir. जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं ना, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिजाइनिंग एंड ऑल सिस्टम का डिजाइनिंग जो करते हैं, उसके लिए टी कोड होता है SPRO. ओके।
You can note it down somewhere. So अब SPRO में जाते हो, then what we need to do is we need to click on this SAP reference IMG. इसके अंदर क्या होता है, जितने भी modules हमारे, all the modules we have in SAP, okay, everything SAP का जो भी configuration होता है, that we do it from here. यहाँ से करते हैं सारी configuration, okay. Now इन इसके अंदर भी specifically अगर हमारे लिए बात करें, like as a production planning consultant, so ये दो हमारे लिए काम किए. You see these two? Yes, So sir. this production is common for both two things. One is for discrete industry and one is for process industry. Sorry, repetitive industry. Repetitive. Yeah, and this is for process industry. This is specifically, you know, that you can see that for Yes, production planning for process industry. So इसके लिए हमारे process industry के regarding जो भी configuration है, that can be done from here. And बाकी जो दोनों है discrete and process repetitive, that can be done from here. Got that? So एक तो ये हो गया. दूसरा other than that जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, that is this one. Can you see that enterprise structure or organization structure? The same thing, different term. So if you go in this, if you drill down that, इसमें देखो definitions है अलग-अलग, finance, logistics, general. So basically क्या होता है, as I told, हर एक module wise देखो MM module, SD module, ये common हो गया, logistics is common for like MM and PP and SD. some इसमें बहुत सारी चीजें जो common है काफी. Then this is for finance, this is for CO, this is for plant maintenance, right? This is for HR, human resource management. So that's why काफी सारे modules there are, we can see here as in with the name. So let's देखो here you can see this defined company. So whenever we go to any client या किसी भी इसका implement करते हैं, right? So we ask them, okay, so what is your company? How many company codes you have? They are like, okay, we have 2 company codes or maybe 1 company code. ठीक है? जैसे what we example क्या लिया था हमने कल, टाटा या सैमसंग. तो सैमसंग है तो अब सैमसंग के there are many plants, लेकिन कंपनी तो एक ही है ना, सैमसंग. There are not many companies, right? Samsung is Samsung only. It could happen that Samsung on a global level एक अलग entity हो. Samsung in India, Samsung India is a different entity, right? Yes, yes. सही कह रहा हूँ मैं? Similar way, if you talk about, you know, this one, yeah, forgetting the name. In any organization, you can take any example. जो भी global level companies होती है ना, उसका जो main entity जैसे Deloitte वगैरह है ना, Deloitte वगैरह जो companies है, Big Four वगैरह, उनमें भी ऐसा है कि जो global companies है, Deloitte USA, that's a different. Deloitte India is different. KPMG तो KPMG India is different. KPMG USA is different. तो जितने भी कंपनीज है, इनका एक मेन जो एंटिटी वो अलग होता है, ग्रुप एंटिटी. उसके बाद वो अलग अलग कंट्री वाइज दे क्रिएट देयर ओन वन कंपनी कोड फॉर दैट कंट्री स्पेसिफिक. फिर वो कंपनी वाली जो चीजें वो आगे ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट करते हैं. दैट्स हाउ इट हैपेंस, राइट? किसी को सबको आइडिया है क्या कह रहा हूं मैं? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू. भाई किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर. समझ में आ रहा है? अभी कुछ लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं किसी को? प्लीज स्पीक इट अप अगर कुछ है भी तो. नहीं सर, ठीक है. ठीक है. सो अभी देखो यहाँ पे गिरिजन एवरीवन. सो Yes. हियर वी डिफाइन दैट कंट्री कोड. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है, नॉट इवन द 4 digit, पीपल हैव डिफाइंड इवन 3 digit एज वेल, व्हिच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. दिस इज नॉट गुड थिंग एक्चुअली. ओके, सो डोंट लर्न दिस इज रॉन्ग. whoever did that, this is wrong. ये सही नहीं है, this is very much wrong. don't know who did it, whatever. मोनिका, नवनीत, सबने अपनी अपनी मर्जी की कंपनी बना रखी है. Let's delete this. Yeah, this is not a good practice, guys. Let's not learn which is not good, which is not right. Okay. So from here, so company code can be anything. As like 1002 is already there, 3, 4, 7, 8, 10, 11. So 11, 12, 15, 17, anything like this. What I'm trying to say here is no, any number you can utilize for the company code. Okay. Correct? Yes, sir. But here SAP, so this is not a standard system which I can give you an example of. This is in like practice system for everyone. That's why this system is messed up. There are a lot of company codes are there. But in general, whenever you know, जब आप पहले first time when you get SAP system access, you get from SAP, no? पर SAP company से हम जब access करते agreement करते हैं, right? So whenever, okay, let's understand in very basic way. Whenever you want SAP in your company or as a client or anything, right? What we do, we reach out to SAP. Correct? That's a very simple logic. तो हमें कुछ भी चाहिए तो we respective company जो है उसको हम reach out करते हैं. And once we reach out to them, तो होता क्या है कि then they say, okay, what do you want? Which version do you want? Okay, what is your plan? Which company you fall into? आपकी industry type कौन सी है? There are many. They actually do our assessment. वो assessment करते हैं actually. They have some checklist कि which country, company, this, that, blah, blah, you fall into. So everything, if everything meets up, everything is okay, then they give us like कि अच्छा आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, everything they analyze. And end of the day, they give us कि okay, now if everything is okay, everything is checked out, then they give you the access. So once or while giving the access, they
they in the standard system, we don't have this many plants or company codes related. We only have two company codes. One is 1710, which I gave you an example of. Where is it? Yeah, one is 1710 and one is 1810. 1810 which is related यहाँ पे. Okay, okay, sir. So 1810 also it is deleted somewhere. I don't know by someone. So only two company codes you can see, 1710 and 1810. So 1710 is for US plant. Okay. Yes. So ये भी किसी ने change किया है यार. Why the people is messing up with the system? Anyhow, so here that it will be written like plant US plant something, or 1810 will be for Indian plant. That's how it is. Okay. So that's why I generally take the example which is standard only. Okay, sir. But as I said, we always should take an example of 4-digit only. Or company code आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो. It's not a constraint on that. But still, I would suggest this is a practice system, so always take this one only. 1710. 1710. So better that we do not have any issues or in general. Okay, sir. Yeah. Otherwise, you get a lot of issues. Those things must be set up properly, right? It's not that anything, whatever you can go and do something. It's just that you must set up and design system first, and then you can use that. And for designing and part, we comes in the picture. Like as a consultant, we, you, me, we comes in the picture to design the things in proper way. Okay. So design वगैरह सब proper होना चाहिए. Okay. So अभी काम करते हैं. Let's see the material which is already created maybe. So let's take an example with this one. So this we have seen yesterday. Let's start from directly. So हमारे काम की जो चीज है. So again, I'm not saying that these fields are not important. Okay. Every single view which you have selected yesterday or maybe today, these sales views, these basic data views, MRP views, the general data, work scheduling, everything is important. But for production, like right now we are learning only for production. Because जब भी कोई metal master system में create होता है ना, so we as an only worried about our part, like which is MRP 1, 2, 3, 4 view and work scheduling view. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता what will come into the accounting view, accounting costing view, general view, or maybe sales view. These we don't bloody care about that. Okay. That's why let's study about these 4 and 5, these 5 views. Okay. Okay, let's go inside now. Plants, so location we've selected. Okay, here comes the picture. So this one is important, of course, the description. So koi material, like what is the description of the material? Is it a paracetamol tablet, or is it some car? Is it what is it? Whatever it is, like based on that you can give the description. अपना उसका plant assign कर दिया आपने कि वो कौन से plant में fall करता है. उसका ये जो नंबर है जो ऑटोमेटिक आ जाती है as I told you yesterday. ठीक है. Then अब आते हैं यहाँ पे. So basic unit of measure, this is again important, like जो material आप बना रहे हो, the material code which you are opening, right? उस particular material का what is the unit of measure? In which unit of measure हम उसको measure करते हैं. That's the basically this thing. अब measure के लिए ये जो चीजें होती है, I think ये already defined होती है. जब भी आप कोई भी material R&D department जो होता है आपका, वो design करता है या फिर develop करता है. So this is already defined कि हम किस measure में किस unit of measure में measure करेंगे and उसको order कौन सी यूनिट में करेंगे, production किस में करेंगे. So all these things are already defined already in your for this product. So that we will enter here first. Second, these things are not important. This is important. Okay, this I can tell you. So the meaning of this is plant specific material status. Like for specific plant, मतलब for 1710. If you want to do something, if you want to give some specific status to the material. Now, what do you mean by specific status? Okay. As you can see here, there are this many status: design and plan, use, phase out, obsolete, not active, purchasing block, FM block. Can you see the meaning of it? What can be the meaning of this? So design means that you created this material, but right now this is in design phase. This means this is in design and plan phase only. Like you cannot sell this, you cannot do anything else. Still, this is in R&D phase only. This use is like you can use that, of course, right? You can use this for any purpose you want. Phase out means, yeah, it was using, but now it's phased out. Like we are not using it for particular this plant or something. It can be used in another plant. Same obsolete, also same meaning that it's not using now anymore. We are not using this product for this plant. Not active is again the same kind of meaning. Purchasing block means only for purchasing this is blocked. Like we cannot purchase this from anyone. बाकी normally we can use that. हम sale कर सकते हैं, deliver कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं. Leकिन we cannot purchase this. That's very simple. मतलब we can produce it in house. That's very much okay, but we cannot purchase it. It's the same meaning. So okay, I think समझ में आ गया, right? What is the meaning of this? Are you clear with us, guys? Yes, sir. Again, let me tell you the reason behind that. Suppose किसी company में, like in your company or somewhere, wherever you go, right? तो आप किसी specific material को या product को
you want to define like कि ये this metal is in design stage only. I don't want कि कोई भी बंदा by mistakenly इस metal को किसी पर्पस के लिए यूज करे. Like you don't want that mistake to happen right in your system. What you can do if you can give this status as in yeah, 0 1 there, no? So then by even though intentionally also nobody can be allowed to use this material in production or anywhere else other than R&D, other than design part. That's the meaning of this. And here from here we can define that. So this is the configuration part. So don't worry about configuration part as of now. We'll understand that in the maybe last or something. This is how we define that. Even though why, let me tell you what is the meaning of that. Suppose what I said is design कि design के लिए use कर सकते हैं. If I double click on design now, तो इसमें ना हम define भी करते हैं कि ये particular material किस area में we can use that for specific to this plant. So design means that can we use this in purchasing? So B means error message. No, we cannot use that. Look, क्या लिखा हुआ है? Message if material is used in purchasing. So is it like can we? Yes, no, or what? So if you will try to use that, system will give an error message that you cannot use that. That's the meaning of that. It means that it can be used in design, but you cannot purchase it. Are you getting the meaning of it? समझ में आ रहा guys? क्या मतलब है इसका? देखो वापस बताता हूँ. इस B का क्या मतलब है यहाँ पे? B means error message. Error message मतलब कि अगर इस material को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि system message देगा if you will try to use this material in purchasing. मतलब अगर इस material को purchase करने की आप try करोगे, then system will give an error message. मतलब you cannot purchase that in simple term. Okay, got that? Okay. Next is this different. Let's go to this. Okay, A. So this is MRP. Material account is MRP. Okay. So in MRP, A means warning. Yeah, you can use that, but still system will give you warning that you are using that, and this material is only in design phase. But do you want to run the MRP? System will ask for your permission. That do you want? It will give you just a warning. If you want that to be, override that warning, you can do that. If you don't want, then stop there itself. Like suppose there could be a case जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ना you want to use that, but for only for certain reasons, like only for certain levels or something. But you want कि system error ना दे. Like how system will not give an error? Or you want देखो दो चीज है. एक तो ये चीज की error means हो गया that it cannot be allowed. Like no option ही नहीं है. Error means that there is no option. System will not at all allow you to do anything at all. But warning means that it will just warn you. Now it's your decision as a human that you want to override that or not. Very simple. समझ में आया? गिरिजा, राजेश? Understood, sir. Good. Similar Yeah, way, understood, to explain in Hindi, guys. ठीक है. अगर नहीं समझ में आया तो what I'm trying to say here is that तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बेसिकली अलग अलग सेक्शन है राइट यहाँ पे देखो परचेजिंग हो गया, बॉम हो गया, राउटिंग हो गया, तो ये क्या चीज है कि हम कहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते. दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट. अब इसमें क्या है, जैसे ये था परचेसिंग का कि परचेसिंग में क्या था वो चीज कि वी कैन नॉट यूज दैट. व्हाई? बिकॉज हमने क्या दे दिया यहाँ पे बी दिया हुआ. बी मींस क्या होता है? एरर मैसेज. कि अगर हम इसको परचेज करने की ट्राई करेंगे इस मटेरियल को, देन सिस्टम विल गिव एरर मैसेज, मतलब इसको परचेज नहीं कर सकते हम. सिमिलर वे अगर हम इसको एमआरपी में मटेरियल अकाउंट प्लानिंग में अगर यूज करेंगे, देन सिस्टम इसको यूज तो करने देगा, बट इट विल गिव यू वार्निंग. तो आपकी परमिशन पूछेगा कि यार आपको करना है कि नहीं करना है. तो अगर आप करना चाहते हो तो उसको ओवरराइड कर सकते हो, नहीं करना चाहते यू कैन इग्नोर दैट. सिमिलर वे यहाँ पे भी ए मतलब सेम मीनिंग है इसका कि इसमें सब भी यूज कर सकते हो, लेकिन दिस इज अ वार्निंग. यहाँ पे अगेन बी है. बी मीन्स कि अगर प्रोडक्शन में आप यूज करना चाहोगे तो सिस्टम आपको एरर देगा. मतलब ना आपको प्रोडक्शन कर सकते हो उसका, ना आप उसको परचेज कर सकते हो. ये समझ में आ गया यहाँ तक? नीदर यू कैन परचेज, नीदर यू कैन प्रोड्यूस. एमआरपी में यू कैन यूज इट, बट आपको सिस्टम वार्निंग देगा. Similar way, अलग यूज ऑफ द इन्वेंटरी में you can maintain inventory of that. You cannot do warehouse management, but this blank means that you can do that. There is no issue with that. Okay, so this is the meaning of that. अब इन सब में सेम है, सेम टर्म है, but yes, ये this could be vary. This could vary. कहाँ पे A है, कहाँ पे B है. This can vary based on this thing. कि हम क्या कर रहे हैं. जैसे परचेसिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? The meaning of purchasing block is कि परचेसिंग नहीं कर सकते हम. तो that's why this is B. Still this is B because we should not allow to do purchase. But we can produce it, as I said, we can produce it. Yeah, so this is again वो give आपको warning दे रहा है कि आपको करना है कि नहीं करना है, but it will allow you. ये रोकेगा नहीं आप. ठीक है. और MRP of course you can do that. और क्या चीज है? बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है. मतलब everything everywhere it is allowed. Good. So this is how it meaning. Absolute means that you cannot do anything. Look, can you see this meaning? Why I would try to say obsolete. Obsolete means everywhere it's B only, means you cannot use it anywhere, neither in production, neither in purchase, nor in BOM. And nowhere you can use this basically. Again to repeat in Hindi, obsolete का simple सा meaning है guys कि obsolete मतलब you cannot, आप use ही नहीं कर सकते इसको यहीं पे.
तो यूज नहीं कर सकते मतलब सब जगह पे एरर मैसेज आना चाहिए अगर वो यूज करे तो। और बी का मतलब क्या था हमारा, एरर मैसेज। दैट इज वाई सब जगह पे देखो बी लिखा हुआ है इसने, चाहे है नहीं है। और जहाँ पे जो मेन जगह जगह बॉम्ब में, ना बॉम्ब में यूज हो सकता है, ना परचेजिंग में यूज हो सकता है, ना राउटिंग में यूज हो सकता है, ना एमआरपी में यूज हो सकता है, ना प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। सो एवरीवेयर इट इज गिवन बी, इवन हियर एज वेल। एंड इन्वेंटरी में ये दिया हुआ है बिकॉज यू कैन मेंटेन द इन्वेंटरी इफ यू वांट, बट यू कैनॉट यूज इट, और यू कैनॉट प्रोड्यूस इट, यू कैनॉट परचेज इट, you cannot sell it, you cannot do anything basically. So this is how it's a meaning. So this is the difference in this configuration of this status का क्या क्या meaning होता है. That's the meaning of this config, these values. So that's why I said it कि आपको जहाँ पे जिस तरह से you want to use that, you can give that particular this function, and based on that system will react. Like if you assign the obsolete, then it will not allow to use anywhere even though the material is active. कोई फर्क नहीं पड़ता. It will not, this will not impact anything. Similarly, if you use it as in use or active or something, it will allow you to use anywhere you want, or maybe wherever it is active, like that. Okay, good. Third is, this is the MRP group we were talking about. I think no, we did not talk about. Okay, so MRP group means there are two ways now, guys. One is you can give these settings here as well. Like MRP group means that some settings you can give directly into this group, and system will behave accordingly. मतलब suppose MRP का मतलब क्या होता है? चलो, MRP means the material requirement planning. Material requirement planning means कि आपको जब भी कोई मटेरियल प्रोक्योर करना है, परचेज करना है, क्या करना है, उसकी जो स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है। स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट मींस कि कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना नहीं है, कितना प्रोक्योर करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना कस्टमर ऑर्डर है, कितना नहीं है। सो दैट्स एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय एमआरपी। मतलब एमआरपी बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक इंजन है, एक फंक्शन है एसएपी में, जिसके थ्रू वी कैन कंट्रोल कि कहाँ पे क्या चीज कैसे रन होगी, कैसे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, कितना कम पड़ रहा है, कितना प्रोड्यूस करना है. So all these things you can take care by MRP. Okay. So MRP group is just a function. Let's not go into that. Simple. Let's understand these things. These are important. So ABC indicator समझते हैं. ABC indicator का मतलब होता है that this material is categorized into A, B और C, three categories. So A means, can you see this? A means significantly used material. Means this is very expensive. This is very much highly used kind of material. Okay. So that's A category. Or B means that it's a medium significance. Like this material is used, of course, but there's an significance of the material is in medium level, not very much expensive or something. But this is an important material. C means that this is a low significance. मतलब highly used material, काफी ज्यादा यूज होता है इसका, लेकिन इसको ज्यादा महंगा मटेरियल नहीं है. It's something which is like we generally can procure and keep it extra in our stock. इन्वेंटरी में बहुत ज्यादा रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और बहुत ज्यादा यूज भी होता है, तो या इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी कंज्यूम्ड फॉर सम और अदर ऑर्डर. ठीक है, समझ में आया? So this is just to make sure, categorize the material into reports. How and what kind of material we want to see. If we want to see कि हमारे कौन से material है, which is expensive or which is very much, which has a very much like special significance or something like that. So that thing we can categorize. Like, okay, if we filter out a kind of material, then we'll get to know, okay, so these are 50, 500 or whatever the material. जितना भी count होगा, that we can see. अच्छा, these are the materials which are A category, means high level material, like some expensive material, kind of that. B category and similar with C category, like this. So this is for reporting purpose and all, or for if you want to know like what kind of material you have in your company. This is one. Then MRP type. MRP type. Okay. This is I told you MRP means simple. These MRP 4 views now, 1, 2, 3, 4. These are specifically for material account planning. That we will understand in detail later on after a few lectures. Once we will done with the masters. So as of now, let me tell you the meaning of these functions, like what it will do. So majorly we use, guys, is ND, this one, or PD. Very highly and majorly wherever we have certain company requirements. So ND means that we does not need to do any planning. मतलब अगर आप किसी मटेरियल की आपको प्लानिंग नहीं करनी है, like you don't want any material to be planned for like stock and all everything, like कुछ भी है इसको, we don't want that to be planned. We're using the MRP. Then we give them ND as in this function. It means that nothing will happen, no planning will happen, right? But PD means that it will happen, the planning will happen, okay? And system will react as per your sales order, MTS and MTO. So guys, what do you know about MTS and MTO? Let's understand that. What is MTS and MTO? Make to stock and make to order. Yeah. Make to stock and make to order. What do you mean by that? क्या मतलब होता है उसका? Make to order means once we get the order from the customer, then only we will start the production. That is make to order. That is make to order. Make to stock means based on the forecasting values and demand and
Mm-hmm. Based on the We past will sales do and the, demand, basically. yes, sir, yes, sir. Correct. That is make to stock. Correct. Very good. सबको समझ में आया? What is the meaning of make to stock and make to order? नहीं सर, नहीं Confusion? क्या? नहीं समझ में। मतलब हाँ या नहीं? सही समझ में आया कि नहीं आया? सर नो 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 नो। ओके भाई, मेक टू स्टॉक का सिंपल सा मीनिंग क्या है आप बताओ मुझे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या होता है मेक टू स्टॉक, मतलब क्या मतलब समझ में आ रहा है इस टर्म से, आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा सर छोड़ो नहीं मैं समझ बता में रहा आ हूँ, रहा। चलो नहीं आया ना, कोई बात नहीं। ओके, मेक टू स्टॉक का सिंपल सा मीनिंग है, आप कोई भी मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हो एंड आप उस मटेरियल को प्रोड्यूस करके आपके स्टॉक में रख रहे हो, मतलब आपके वेयर हाउस में रख रहे हो। जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तब आप उसको डिलीवर करते हो। अच्छा, ये हो गया एक सिंपल लॉजिकल आंसर, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कॉलगेट है, कोलगेट ऐसा है क्या कि आप दुकानदार पे जाते हो, दुकानदार के पास उसको आप ऑर्डर देते हो कि भाई मेरे को कोलगेट चाहिए, तो आपको ये बोलता है कि कस्टमर केयर नहीं, आपको 5 दिन लगेंगे सर, 5 दिन बाद आपको मैं बनेगी, प्रोडक्शन का ऑर्डर दूंगा, फिर प्रोड्यूस होगी, फिर आएगी आपके पास। क्या बोलता है दुकानदार आपको? सर दे देता है। दे देता है, उसी टाइम दे देता है। ऐसा जी। नहीं बोलता कि आपको सर 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, कुछ नहीं बोलता ना। नहीं सर, इसका नहीं मतलब सर। क्या हुआ कि वो जो मटेरियल है, कोलगेट है, जो प्रोडक्ट है, वो उन्होंने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ है अपने लास्ट पास इन लाइक सेल्स एंड डिमांड के कंजप्शन के हिसाब से। मतलब कि उन्होंने जो आपके जितना भी उनका उनको लगता है, इस दुकानदार को पता होता है कि मेरा इस महीने में या इस 6 महीने में, 3 महीने में, जो भी है कि इतना माल बिक जाएगा मेरा, करेक्ट। उसके हिसाब से ऑर्डर करता है चीजें, जी। करेक्ट। तो उसके हिसाब से अब उसके हिसाब से ऑर्डर कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से किसी ना किसी कंपनी ने प्रोड्यूस भी किया होगा। जी। तो कंपनी ने प्रोड्यूस किया अपने डिमांड के हिसाब से कि मेरे कितना कंज्यूम हो जाएगा, कितना सेल हो जाएगा, उस सेल के हिसाब से उन्होंने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद आपने वेयर हाउस, अपने जो उनका जो भी स्टोरेज एरिया है, तो आप उन्होंने रखा। वो रखने के बाद जो भी दुकानदार, उनका जब ऑर्डर आया तो उन्होंने उनको दे दिया। दुकानदार के पास आप गए, आपने जब ऑर्डर दिया उनको, या फिर आपने जब भी कोलगेट आपको चाहिए था, आप उनके पास गए, आपने उनको पे किया और आप ऑर्डर कोलगेट हाथों हाथ लेके आ गए, आपको वेट नहीं करना पड़ा। दैट इज द मीनिंग ऑफ जी। मेक टू स्टॉक, करेक्ट। अब मेक टू करेक्ट ऑर्डर करेक्ट। का मतलब क्या होता है? सपोज आप कार खरीदने गए हो, ठीक है। अब कार, देयर कुड बी टू वेज, कार इज एन एग्जांपल ऑफ मेक टू स्टॉक एंड मेक टू ऑर्डर बोथ। कैसे? अब अगर आपके पास कोई ऐसी पुरानी कार काफी टाइम से आगे रिलीज होगी, मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएगी हाथों हाथ, कि आप गए और आपने उठाया, आपने गाड़ी जो भी पसंद किया, आपने गाड़ी कलर चूज किया और आप लेके आ गए। लेकिन अभी जैसे कोई नई नई गाड़ी रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, चलो वो तो हो गई बुकिंग की, भाई वो मतलब अवेलेबल होगी लेकिन वो बुकिंग पे है, तो इसको सोल्व टू मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो कि आप गए, आपको उस टाइम नहीं मिली आपको। और दूसरी चीज ये होगी, आप उसको कार तो चाहिए आपको, जो नई रिलीज हुई, लेकिन आपको उसमें क्या है ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन चाहिए। जैसे आपको ब्लैक कलर चाहिए, लेकिन ब्लैक कलर में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे मेरे को टायर कुछ अलग से चाहिए। जैसे टायर जो नॉर्मली अगर 14 इंच के आ रहे हैं, आपको 16 इंच के चाहिए, 18 इंच के चाहिए। जैसे थार लेने गया, सपोज करो, ठीक है। थार आपके जनरली उसमें 14 इंच से 16 इंच के जो आते होंगे, लेकिन आप बोलते हो मुझे तो 18 इंच के टायर चाहिए, राइट। तो अब ये आपकी खुद की डिमांड है, राइट। तो कंपनी तो बोलेगी भाई आपको थार चाहिए, मतलब वो तो 16 इंच के 14 इंच के जो भी उसके आ रहे होंगे, वो आपको डिलीवर करेगा वो, करेक्ट है। लेकिन आप उसको बोलते हो कि करेक्ट। नहीं सर, मुझे 14 इंच वाले या 16 इंच वाले नहीं चाहिए, जो कंपनी फिटेड आते हैं, मुझे तो अलग से 18 इंच के चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करेगा, कंपनी को अलग से आपके लिए बनाना पड़ेगा वो गाड़ी, आपके लिए अलग से टायर लाने पड़ेंगे, अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसको। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सही सही। वो आपको उसी टाइम नहीं देगा, आपको उसको टाइम लेगा वो उसका, कि सर मैं आपके पहले तो टायर मंगाऊंगा, आपके लिए ऑर्डर कर रहा है, तो आपके लिए मुझे पहले वो 4 टायर मंगाने पड़ेंगे। मेरे पास तो ऐसा है नहीं, कि मेरे पास जनरली क्या आता है, देखो सर 14 इंच वाले 16 इंच वाले आते हैं और मेरे पास वो अवेलेबल है तो मैं दे देता हूँ। लेकिन कंपनी बोलेगी कि सर अभी इसमें मुझे आपको टाइम लगेगा, देखो 15 दिन 20 दिन तो मेरे को टायर आने में लगेंगे, उसके बाद मैं इसको असेंबल करूंगा तो 2-3 दिन उस पर लग जाएंगे मेरे को, क्योंकि मेरे पास काफी सारा वर्कलोड है, फिर आपको मैं 1 महीने बाद दे दूंगा। ऐसा ही कुछ होता है, कार जब खरीदने जाते हैं अपन, हाथों हाथ नहीं मिलती जनरली, राइट। सो नहीं। इसको हम बोलते हैं मेक टू ऑर्डर, कि हमारे ऑर्डर के हिसाब से कस्टमर ने या फिर कंपनीज ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया और आपको दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेक टू स्टॉक एंड मेक टू ऑर्डर। सबको समझ में आ गया? अभी हिंदी इंग्लिश सबको और कोई लैंग्वेज भी चाहिए तो बस बता देना गाइस, मारवाड़ी पंजाबी। आगे सर आगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। देन नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, एनडी का मतलब होता है नो प्लानिंग, मतलब आप यू कैन नॉट प्लान इट। अब इसको डिटेल में मत जाना, अभी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। वंस यू विल डू द एमआरपी देन यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो नो प्लानिंग इज सिंपल टर्म कि आप यू कैन नॉट प्लान एनी मटेरियल बेसिकली, बट पीडी मींस यू कैन प्लान दैट, वेरी सिंपल। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। स्टिल इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम अदर थिंग्स एज वेल, कि आपको दूसरी भी चीजें अगर समझानी तो आई कैन एक्सप्लेन दिस सिंपल, कि डीडी मींस होता है डिमांड। लेट्स नॉट गो दिस इज डिफरेंट टॉपिक, yeah, this I can explain. So time phase planning, this can be used somewhere.
So time-based planning means, you know what, guys, is kind of planning which happens specific to a time. Okay, let me give you an example. Means suppose ice cream. This is ice cream, or even though if I take an example of firecrackers, both the things are usually, you know, generally available anytime, 24/7, all the times. But generally, earlier when there was not much consumption was there, then you know was what used to happen. So ice cream was used to available only during summers, like most of the times. And even though the firecrackers were mostly consumed during Diwali or something like that only, right, guys? But nowadays, because of the like marriages, because of some parties, events, functions, like today Modi became third-time prime minister. So again, this for that also people consumed a lot of fireworks and all. So companies को तो बना के रखना पड़ा, right? ऐसा तो है नहीं कि like company के पास होगा नहीं तो आप कहाँ से लेके आओगे उठा के? So company will have to plan and company will have to make sure that अच्छा कब कौन से event के हिसाब से उनको production planning करनी पड़ेगी, and then they'll have to produce it, right? So now this thing is specific to time piece कि जहाँ पे ऐसी कोई companies है जहाँ पे only time specific you know planning होती है, like only in the case of या जैसे दिवाली से वो है फार्मेसी वगैरह, फार्मा कंपनीज वगैरह. So ज्यादातर जो ऐसा कंजप्शन होता है टेबलेट्स का वो विंटर्स में होता है. सर्दी जुकाम की टेबलेट्स हो गई, कोल्ड वगैरह की टेबलेट हो गई, कोल्ड कफ वगैरह. So generally you know it's very less chances that you have cold and cough in summers, but then you have in the winters. So that's why they make sure that in winters they have a lot of production workloads and all. They do a lot of production then compared to summers. Okay, so that's where we can use this time-based planning. Then this is again with respect to reorder point planning. So reorder, let's understand this one then. If you understand this one, then you understand this one as well. So reorder point planning means that आपने क्या किया system में आपने, okay, let's understand that. Suppose if I use the reorder point planning, you know the system will make this field as mandatory. This reorder point मतलब आपको कितने, how much quantity के बाद में you want the system to reorder it. Reorder means simple कि if you have right now in the stock 1 lakh quantity of some material of this material, suppose this is the paracetamol tablet. Okay, this is paracetamol tablet. So right now in your company, in your warehouse, you have 1 lakh pieces of the paracetamol tablet already, and you want कि जब भी मेरा already, you know, once the we sell it right to many customers according to the needs and all, but when it reaches 1,000 quantity, then I want system to again do the planning and again start the production and all, so that I can have sufficient stock in my warehouse, store location, and I can fulfill the demand of my customers. Giriza, is it okay? अभी तक जो समझा रहा हूँ मैं, राजेश? Yes, sir. You understanding what I'm trying to say? What Yeah. example I'm trying to make here? Yeah, clear. Good. So now what I want, like I want system to be smart enough that once it reaches 1,000 pieces, it should automatically let me know, or maybe run the MRP automatically. That okay, it reaches 1,000. Now the stock is of 1,000 pieces only, then it should automatically run the MRP. Now, this is the meaning of that VP, reorder point planning. That system should automatically do the reorder point planning. Like once it reaches some level, certain levels, like what do you mean by certain levels? Which means that this value will give here. It can be anything like 1,000, 100, 10, 1 lakh or something. It can depends product to product, company to company, process to process. But we'll have to give some value, some or another value here. So guys, हिंदी में समझाऊं अगर वापस, तो reorder planning का मतलब होता है कि एक certain क्वांटिटी के रीच होने के बाद में, लेवल पहुंचने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको वापस हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. लाइक वी वांट सिस्टम टू डू ऑटोमेटिक प्लानिंग. तो अगर हमें 1 लाख क्वांटिटी के पीसेस हमारे पास पड़े, राइट, उस 1 लाख में से हमने कस्टमर को, अलग अलग कस्टमर को जैसे उनका ऑर्डर आता गया, हमने उनको सेल किया, राइट. भाई किसी को 500 गया, किसी को 5 लाख गया, किसी को 2 लाख गया, करते करते चले गए अपने पास. लेकिन जब हमारे पास 1,000 पीस क्वांटिटी बचे, अगर देन आई वांट सिस्टम की, सिस्टम ऑटोमेटिक एमआरपी रन करे उसकी, ऑटोमेटिक प्लानिंग करे उसकी. तो उसके लिए हम यूज करते हैं वीबी. करेक्ट, दिस इज वीबी. R1 R2 को समझा दिया मैंने. R1 R2 मीन्स कि डिपेंडिंग स्पेसिफिक टाइम में, जैसे आइसक्रीम या फटाके वगैरह जो जलाते हैं अपन, राइट, तो एक स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा यूज होती है, दिवाली के टाइम पे, या फिर आइसक्रीम वगैरह जो गर्मियों में ज्यादा यूज होती है. बाकी यूज होती है लेकिन इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है. करेक्ट. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वन. पीडी मीन्स, पीडी इज कॉमन. पीडी मीन्स आप इसको एमटीओ, एमटीएस कहीं पे भी यूज कर सकते हो. जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज है ना, मोस्ट कॉमन यूज जो एमआरपी टाइप है वो पीडी है हमारा. ओके, दिस इज मोस्टली यूज्ड एमआरपी टाइप. एनडी मीन्स कि हमें किसी की प्लानिंग करनी ही नहीं है. So in this case, we use ND. So these are the 4-5 which are generally mostly used in any company. Either it's R1, VB, PD, and ND. That's all. Okay. I hope you understood that. Let's go with PD.
Then comes this one, MRP controller. So MRP controller is nothing, MRP controller is the person responsible to run the MRP or look after the MRP. That's it. Like, who is the person who will take care of the planning? So, in every company you have a production planner, right? Who takes care of planning that, okay, what to produce, what to not produce, this month, what was the plan, next month, what will be the plan, like that. Is everything is, planned with that person as per the demand and all. So this is basically the name of that person or group of the person, like who is the person responsible. So we can give the name here, like यहाँ पे मैंने ऐसे नाम नहीं दिया हुआ standard. We can give, name here as well, that like 003 or maybe Girija, like you are the one, Girija, like you are the one who does the planning in your company. So we can give your name here as well, like 003 Girija, like that. So they can assign your name here so that you will be this responsible person to planning this product. Like paracetamol planning is under you as your area of responsibility. So that is the meaning of that. Okay. Next is planning cycle. This is important. Okay, guys, हिंदी में समझाना है क्या, वापस बता देना यार, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया बता देना यार. I cannot do it twice the same time यार. हाँ सर, एक बार हिंदी रिपीट करिए ना. Okay. So MRP कंट्रोल का मतलब है that कौन ऐसा बंदा है आपकी कंपनी में जो प्रोडक्शन प्लानिंग करता है, राइट? जैसे इज इट राजू और कौन, हु इज दिस? राहुल. सुन रहा हूँ सर. राहुल. ओके. सो राहुल, MRP जी. कंट्रोल का मतलब होता है कि कौन बंदा है. जैसे राहुल आप हो, जैसे आपकी कंपनी में आप अपनी कंपनी की प्लानिंग करते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो. प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब तो पता है ना अभी, ये नहीं पता है? जी जी पता है, पता. गुड. सो आपकी कंपनी में जैसे आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग में से आपका अगर ऐसा आप रिस्पॉन्सिबल हो पैरासिटामोल की टेबलेट की प्लानिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, तो आपका नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं कि वैसे आप यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस वन. तो आप उसका मतलब पूरा जो भी प्लान होगा, कितना डिमांड है, कितना कस्टमर ऑर्डर है, कितने नहीं है, इस मंथ कितने प्रोड्यूस करने हैं, नेक्स्ट मंथ कितने प्रोड्यूस करने हैं, लास्ट में कितना बचा है, कुछ ओपन क्वांटिटी है क्या, सो वो सब प्लानिंग आप करते हो. सो दैट्स वी कैन गिव यू नेम हियर. ओके, जी. ओके. गुड. प्लानिंग साइकिल का मतलब होता है दैट इसकी इस पर्टिकुलर मटेरियल की प्लानिंग इफ यू वांट टू डू स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक टाइम जोन, लाइक सपोज every month in your company, suppose you have the kind of plan that every month you run the planning of all the materials, maybe not specific to this material I'm talking about, for all the material you run the planning only maybe suppose first Monday. I'm just giving an example. Suppose I know even some companies like does like that every first Monday or every first maybe some date or something. So it can be anything, either a date, it could be either this particular day or something. So they fix it. Okay, every Monday we'll do the planning. Every Monday or maybe every first week we'll do the planning. So we can define that. We can automate that. Okay, कि यार इस हर जो भी मटेरियल की प्लानिंग we want to do, in the first week or first Monday or something, we can define that. Then what system will do? System will automatically do the planning only on that particular day or particular week or particular date. That's the meaning of that. Understood? So in this we define that cycle. I'll showcase it to you later on, not right away. So this planning random means we define that. Okay, system asks system. Okay, यार बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ आपको, बात में confusion नहीं होगा. Again, meanwhile, let me repeat in Hindi. So guys, planning cycle का मतलब होता है कि like हम कब, एक मिनट रुको. Planning cycle का मतलब होता है कि when we are doing the planning, मतलब कब planning कर रहे हैं. Okay, और when उसका मतलब क्या है कि आप मंथ में आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल है वो कब आप करते हो. कॉन्फ़िगरेशन here we do that. So yeah, ये प्लांट स्पेसिफिक होता है. सपोज अपना प्लांट है 1710. So 1710 प्लांट के लिए if I want to create a planning calendar, so maybe a new planning calendar. So this is the configuration path. So this is where we maintain it. Planning calendar. Create a planning calendar. Okay, let's create some maybe some. So यहाँ पे मैंने create किया कि planning of materials on first
मंडे, ठीक है। व्हाट आई कैन डू हियर इज फॉलोइंग वर्किंग डे, ठीक है। कब वर्क डेज, वीकडे, वीक्स, कब मंथ में वर्क डे, which monthly, एक मिनट, this स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ से मंडे, तीन 900, let's do it for complete year maybe, let's till 2030 तक मिलेगा ये प्लान। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या असाइन कर दिया, देखो सिस्टम ने ऑटोमेटिक ले लिया। सिस्टम क्या करेगा, एवरी में 3 तारीख, अच्छा एवरी डे कर दिया मैंने, सॉरी एवरी डे प्लान कर रहा है। ओके 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 ओके, तो अगर मंथली करना है हमें, so we can do that, yes, let's go back, then calendar, month, starting from June, next something like that। So ये क्या कर रहा है, देखो 3 तारीख को, फिर नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। जो भी 30 दिन बाद की डेट आएगी, तो वट एवर द डेट कम आफ्टर 30 days or 31 days based on the month, that date system will automatically picking up, so according that system will run the MRP starting from this June till next May, or next June, sorry, 1 year, for 1 year I'm planning this. So that is the meaning of this calendar, like system automatically will plan for that 1 year, that that particular day system will do the planning, like on 3rd June, 1st July, 1st August, 3rd of September, October, November, December, January, like that. That's the meaning of the calendar. Like if I save this, it will be visible me there in this look, let's go back here. If I come here, look, can you see that? So this is visible here now. If I select this, assign this, if I click yes and enter, assign this them here, it means that for this material, इसकी planning होगी every Monday only, like every, sorry, first month of that, every that particular date, every 1 month, ऐसा, okay? This is the meaning of that. So that also, if you want, we can do that. That's also one good feature we have. Okay, next. I think it's first Monday of every month, right? No, it can define, we can define it like अपने requirement के हिसाब से हम कभी भी कर सकते हैं buddy, like anything we want. It can be first Monday, it can be particular day, it can be अगर आज से अगर आपको हर महीने करना है, so आज की डेट से, सपोज आज आप ऑलरेडी 6 तारीख हो गई है हमें, राइट, नहीं 9 तारीख हो गई है, तो 9 तारीख से मतलब वो 1 महीना कैलकुलेट करेगा, मतलब 30 दिन 31 दिन जो भी होंगे स्टैंडर्ड, वो कैलकुलेट करेगा, उस कैलकुलेट के हिसाब से सिस्टम आपको डेट लेगा। सो वो सब डिपेंड करता है आपको कब से स्टार्ट करनी है और कैसे प्लानिंग करनी है, इट्स ऑल अबाउट यू, ऑन डिपेंडिंग ऑन यू। सिस्टम के पास कैलेंडर है, सिस्टम ऑटोमेटिक प्लानिंग कर लेगा उस डेट के हिसाब से, डे पे, मंथ पे, वीक पे, ईयर पे, है ना। इवन एवरीडे प्लान भी कर सकता है सिस्टम तो। चलो, उसके बाद आता है हमारे पास लोड साइजिंग प्रोसेसर। लोड साइजिंग प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि हम जो भी मटेरियल प्लान कर रहे हैं ना, अब उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है या ऑर्डर करना है। अब रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं, वे प्रोक्योर इट, राइट, हम प्रोक्योर करते हैं, तो प्रोक्योर करना तो हम कितनी कितनी कैसे कैसे क्वांटिटी में प्रोक्योर करना है। और सेकंड एग्जांपल, एफजी और एसएफजी है, हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम प्रोड्यूस में कितनी कितनी कैसे कैसे क्वांटिटी में करना है। दैट्स द मीनिंग ऑफ लॉट साइजिंग, कि लॉट साइज क्या है उसका। ओके, तो इसमें भी लॉट साइज हमारे पास बहुत टाइप के हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। वीकली मीन्स एक पर्टिकुलर वीक में, सपोज मैं आज अगर एमआरपी कर रहा हूँ, तो मेरी पूरे वीक में जितने भी ऑर्डर लगे होंगे, लाइक सपोज एक वीक में मेरे 5 ऑर्डर आए, 5 सेल्स ऑर्डर आए, या फिर 5 कोई कस्टमर ऑर्डर आए ऑफ सपोज 1000 क्वांटिटी ईच, लाइक 1000। सो मतलब क्या हुआ, एक वीक में मेरे पास 5 ऑर्डर आए, मतलब इस वीक की टोटल डेटा कितना है, 5000। सिस्टम क्या करेगा, 5000 की प्लानिंग करेगा, 5000 का प्रोडक्शन करेगा, या 5000 की प्लानिंग प्रोक्योरमेंट करेगा। सिमिलर वे मंथली, डेली मींस आज के दिन में जितना भी कुछ आया होगा उसकी, मंथली मींस दैट टोटल मंथ वाइज। और अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस फोर। सो ईएक्स मींस दैट जितने का भी ऑर्डर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथ है, दिन है, 1 दिन है, 2 दिन है, जितना भी है, जितने भी ऑर्डर होंगे, आज एमआरपी कर रहा हूँ मैं, तो आज के दिन तक जितने भी ऑर्डर मेरे पास है, वो सबको सम अप करेगा सिस्टम, और उसका प्लानिंग करेगा। या तो प्रोक्योरमेंट करेगा अगर ऐसे आरएमपीएम है तो, और अगर एफजी है तो उसका प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर लगाएगा।
ठीक है. Second is fixed. मतलब fixed means that okay, there could be the demand can be of 5,000, 10,000, 5,200, 10,500, anything, can be any random, basically depending on the customer demands and orders and all. But the most important part or thing here is, but it will do the production or procurement in fixed size only. What is that fixed size? Like the way we understood this, no? We understood this one like VB. But once we enter this, then we'll have to give the value that how much is the reorder point quantity. Similar way, if you want to do here, this one, FX, look, this one will ask you that what is the lot size? What is the fix? Which system highlighted automatically? Look, if I use FX, system highlighted this field. It will enter, you have to enter the value here. So fix means how much fix? Is it 1,000, 5,000, 10,000? What? So now in the multiplication of 10,000 only, or 1,000 only system will do the production or procurement. Matlab, if you have let's understand with an example. So if you have open quantity or order quantity from customer or something of 5,500. So can anybody tell me exactly system कैसे order बनाएगा? ये बता सकते हैं मुझे how system will get an order? If the open quantity or order quantity is 5,500 is open with me, which I need to plan, which I need to produce maybe. Okay. So how or the order will be created? How many and how much order will be created? Any idea? Girija, Rajesh, anyone? No, sir. No? Okay. Six That's orders it. will be made. Fixed का मतलब क्या हुआ? 1,000. Exactly, 1,000 each. So 1,000 each, so means total suppose- 5 orders will be 1,000 there. each. Okay. Ab मेरे पास how much is the quantity I have open? 5,500. So let's understand this. So 5,500 minus 1,000. Why minus 1,000? Because system की limitation क्या है? Only 1,000 बना सकता हूँ एक time पे. So that is why what system will do? System will minus that quantity. Okay, what is the total? 5,500 minus 1,000 is equal to एक order बन गया. Again system will check what is the remaining 4,500. Again system will check, okay, is it more than 1,000? That yes. Again it will reduce 1,000 out of that. So 4,500 minus 1,000 equal to 3,500. Similar way, it will do for multiple times. And how much order will be created? 5. Take for 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Now the final quantity remaining is 500 only. Now can anybody tell me what will happen? System order बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा 1,000 का बनाएगा. Why? Because the fixed order quantity is 1,000. So Exactly. 500 also, even it is one क्योंकि piece ऊपर only, में reorder select किया हुआ है. again it will be 1,000 only. Exactly. Who is it? Rajesh, right? Yeah. Oh, very good, Rajesh. That's wonderful. So yeah, that's the meaning of that's correct understanding of fixed lot size. So the meaning is that आपकी कितने भी quantity, like is it if अगर 5,500 नहीं होती और if it would have the quantity would have been 5,050 only, still system order बनाता 6 order बनाता, not 5. 6 order system would have created, and the last order would be of how much quantity? 50. 50 only. That's the meaning of fixed lot size. We have disadvantage of this and advantage also. So this advantage is if we want 5,050 only, then we have excess quantity of 950. Like customer wanted only 950, 5,050 only. So we deliver them 5,050 only. लेकिन अब मेरे पास अभी extra बच गया 950 quantity. What will I do? Right? What will I do of that? That could be disadvantage. That depends actually. So the advantage could be like we can take orders only in the multiplication only. Like if customer want 5,050, we can tell them that either you give the order of 5,000 or 6,000. You cannot give the minimum order. So we can control this way that thing. If customer or client want that thing only itself, like they want it in fixed lot size only. Now, why do we use that? It could be happen that because of our machine constraint, like machine capacity we have 1,000 only, or maybe we have like 2, 3, or so we have like only one machine or maybe 2, 3, whatever the machine we have. With the capacity is of 1,000 only, so we cannot produce more than 1,000 at a time. So what we want is that okay, the order also created 1,000 only, and we want to see like exactly in the lot like how much orders we have created, what we have consumed, and how much time it took actually. So this could be one of the example. Okay. So ये हो गया इसका meaning. So this is one. Other than that, EX means, as I told you, EX doesn't mean anything. EX means that जितना भी बनाना बनाओ, आप कोई limitation नहीं है. Like this field is that EX for EX actually, to be honest. But even if you do not enter anything, it will not stop you. That's the meaning of that. It means that जितना भी open quantity, be it 5,500, be it 6,000, be it 10 lakhs,
be it 1 crore, doesn't matter. It will allow you to produce whatever you have. But if you want to limit that also, that you want only till 1 crore, so you can give the quantity that, okay, if the order will be more than 1 crore, it will create then 2 orders again. So one is of 1 crore, and what the quantity will be more than 1 crore, that will be the second order quantity, like that. So guys, हाँ so this sir. also we can control, like if you want, but generally nobody controls that. Agar control nahi karna hota, then people use the fixed lot size. That's why we do not generally do that, the range part. Okay. Next is this H1. H1 means the replenish to maximum stock level. So what do I mean by that? चलो इसको समझते हैं. ये use होता है guys only and only in the case of VP. ये जो हमारे भी टाइप है रिओर्डेबल प्लानिंग, उसमें यूज होता है कि भाई अब एक दो चीज समझना है इसको. रिओर्डेबल प्लानिंग का मतलब क्या था हमारा, कि हमारे पास अगर 1 लाख क्वांटिटी थी, तो 1 लाख सेल होते होते अगर 1,000 क्वांटिटी तक पहुंच जाए, लाइक if the remaining quantity we have in our stock is 1,000 only, that time we want system to plan the MRP. अब सिस्टम बोलता है चलो ठीक है भाई, अभी 1,000 क्वांटिटी तो मेरे पास पहुंच गई है, लेकिन अब मुझे प्लान करना कितना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है मुझे, लेकिन कितनी क्वांटिटी का प्लान करना है भाई, जितनी ओपन है उतनी की, या फिर एक कुछ मुझे बताओ, तो कुछ गाइड तो करो. सिस्टम को तो नहीं पता है ना. सिस्टम इज नॉट दैट स्मार्ट कि सिस्टम कैन प्रेडिक्ट बाय इटसेल्फ. यू विल हैव टू टेल सिस्टम समथिंग, और एटलीस्ट गाइड सिस्टम कि हाउ मच after this 1,000 quantity, when it reaches to 1,000 quantity, how much is the quantity system needs to plan. So using this lot size, maximum stock level, we can tell system that how much it needs to plan. That can you see the highlighted field where by using this system already highlighted that maximum stock level means how much. भाई उसको समझाओ तो सही, how much is means what is the maximum stock level. Like suppose you have tank of 1,000 liter, so you cannot plan 5,000, right? You can only plan 1,000 till 1,000 only, because you have the limitation of 1,000 only in the tank. So that's why you can procure or produce only till 1,000 quantity, 1,000 liters only, like that, of something like this. Okay, so that's why we need to give the quantity here, that okay, once it reaches 1,000, then again we can do the planning for more 1,000 pieces, like that. This is how the meaning of this. समझ में आ गया guys? Rajesh, Girija, whoever is in English, they want to understand. समझ में आया नहीं आया? Yeah, understood. Girija, Yes, sir. Understood, sir. good. Himanshu, Yes, sir, understood. good. Thank you. Yeah, what about Raju and Rahul? सर हिंदी हिंदी जी हिंदी में सर समझाए? जी सर समझाएंगे भाई. ओके. सो देखो, रीऑर्डर प्लानिंग का मतलब होता है, और सॉरी लॉट साइजिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको ऑर्डर कैसे कैसे क्या क्या करना है. ठीक है. सो लॉट फॉर लॉट का क्या मतलब होता है, that जितना भी क्वांटिटी का ऑर्डर आपका ओपन क्वांटिटी है या कस्टमर ऑर्डर है ना, उतने का सिस्टम ऑर्डर लगा देगा. ओके, चाहे 1,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 50 लाख हो, कुछ भी हो. एफएक्स का मतलब होता है कि जितना फिक्स है, मतलब अगर आपके पास मशीन की कैपेसिटी है कि एक टाइम पे आपकी मशीन 1,000 प्रोडक्ट ही बना सकती है, ओके, नॉट मोर देन 1,000. सिस्टम क्या करेगा, आपका ऑर्डर क्वांटिटी ओपन क्वांटिटी जो है वो अगर 5,000 है, सिस्टम क्या करेगा, 1,000 के 5 ऑर्डर लगाएगा. ठीक है. पर अगर 5,050 है, 5,200 है, 5,500 है, कुछ भी है, सिस्टम उसका एक ही ऑर्डर लगाएगा ऑफ 1,000. वो भी उसको ऐसा नहीं कि 500 बचा तो 500 का लगाएगा, वो 1,000 का ही ऑर्डर लगाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम को गाइड किया हुआ है कि भाई आपका लिमिटेशन 1,000 की. और H1 का जो मीनिंग था वो मैंने बताया कि H1 कब काम आता है जनरली, तो हम यहाँ पे रीऑर्डरेबल प्लानिंग हमारे टाइप यूज करते हैं. और H1 में आपको ये बताना पड़ता है कि भाई कितनी लिमिटेशन है, व्हाट इज द लिमिटेशन, कि कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है वापस. मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब कितना स्टॉक, 1,000, 5,000, 10,000 कितना. तो वो हम क्वांटिटी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्वांटिटी देते हैं यहाँ पे. बस ये हमने समझा इंग्लिश में. इज इट ओके? गुड. ओके, नेक्स्ट इज, that's not good. Let's go to MRP2. So in MRP2, again, most important part. Let me speak in Hindi and English both here. Girija, wherever you do not understand, please let me know, okay? Okay, sir. Yeah. So procurement type का meaning होता है that what do you want? Like suppose, can you see this values? In-house production, external procurement, no procurement or both. इनका क्या मतलब होता है? That in-house production मतलब that we are producing a material in-house. मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है मटेरियल का वो हम अपने कंपनी में ही कर रहे हैं. सो सिंपल सा लॉजिक है, अपनी कंपनी में हम कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं? Please you answer me that thing. In our company जनरली कोई भी कंपनी क्या कौन सा मटेरियल है जो अपनी कंपनी में प्रोड्यूस करती है? Raw material. एसएफजी What about that? Raw material. एसएफजी एफजी
No, No. Girija, are you sure about that? Which company has produced production of raw material in other company? No. Finished product, sir. Exactly. FG. Finished good और semi-finished good company produce करती है, right? Yes, sir. बाकी जो products है raw material, packaging material, most companies they procure that from vendors. So that is the meaning of that. So in-house production means the material which we can produce in-house. मतलब हमारी कंपनी में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम. और F का मतलब होता है external procurement. External मतलब वो जो vendor से procure कर रहे हैं हम. That's the meaning of that. Okay. So RM and PM material के केस में we will use F because we procure that material. वो यहाँ से सिस्टम को यहाँ से समझ में आता है. देखो हमें तो पता है कि RM material है मतलब ये procure हो रहा है. But how system will get to know? System get to know by this value. Is it an in-house produced material or is it an external procurement material? ठीक है राहुल. Yes, sir. Yes, sir. गुड. सो इससे कैटेगराइजेशन होता है. नो प्रोक्योरमेंट मतलब हम प्रोक्योर करते ही नहीं है मटेरियल को, ना प्रोड्यूस करते हैं ना प्रोक्योर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. ठीक है. फोर्थ इज बोथ, मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम प्रोड्यूस भी करते हैं और प्रोक्योर भी करते हैं. दैट डिपेंड्स कि सम टाइम आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो है, लाइक यू हैव मशीन, बट इट कुड बी हैपन लाइक आपका बहुत कंजप्शन जो उस मटेरियल का कम है, बहुत कम है. सो समटाइम्स व्हेन यू हैव बैंडविड्थ तो उस टाइम आप प्रोड्यूस कर लेते हो, और सम टाइम व्हेन यू डोंट हैव बैंडविड्थ आप प्रोक्योर कर लेते हो. So such kind of material can have this last option. So in this case system आपको allow करता है production करने के लिए भी और procurement करने के लिए भी. Okay. I hope you understood. Yeah. Okay. Then there's a term called backflush. The meaning of backflush is automatic withdrawal of goods in English, in simple, in logical way. So backflushing is a term that automatic withdrawal of goods, मतलब automatic good issue basically. अब what do you mean by good issue? ऑटोमेटिक गुड इशू का मतलब क्या है? गुड इशू कहाँ पे इशू करते हैं मतलब? प्रोडक्शन करते समय सर, कंजम्पशन मारते समय, राइट? कंजम्पशन के लिए कि जो भी मटेरियल हमारे जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, लाइक टू प्रोड्यूस एन एफजी मटेरियल, कौन से आरएम कंपोनेंट और पैकेजिंग मटेरियल भी नीडेड. सो दैट मटेरियल वी इशू फ्रॉम आवर वेयर हाउस टू प्रोडक्शन एरिया. करेक्ट है राजेश, गिरिजा, हिमांशु, राहुल? जी जी. Yes, sir. यही करते हैं हम. भाई Yes, sir. किसी भी मटेरियल को प्रोड्यूस Yeah, करना तो उसके लिए हमें आरएम और पैकेजिंग, रो मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल तो चाहिए होंगे, राइट? जी. सो चाहिए मतलब क्या होता है कि हमें इशू करना पड़ेगा. लाइक इन वेयर हाउस इट कुड हैपन दैट वी हैव इन लैक्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे पीसेस पड़े हो सकते हैं. लेकिन अगर हमारे कस्टमर ऑर्डर 5,000 क्वांटिटी का है, मतलब अगर 5,000 एफजी के पीसेस हमें देने हैं, सो 5,000 के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा हम उतना इशू करेंगे, राइट? सारा का सारा तो नहीं करेंगे ना. दैट इज व्हाई दिस इशू इज इंपॉर्टेंट. सो इफ यू वांट दैट सिस्टम टू डू ऑटोमेटिक इशू, ऑटोमेटिक सिस्टम इशू कर देगी जितना भी जरूरत है. अगर पीसेस बनाने के लिए, अगर 5,000 बनाने के लिए अगर मुझे 5,000 क्वांटिटी चाहिए आरएम की, या 2,000 क्वांटिटी चाहिए, 1,000 चाहिए, जो भी अलग अलग मटेरियल होंगे हर एक. अगर अगर आप 50 आरएम मटेरियल यूज हो रहे हैं, आपके 50 रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं बॉम्ब में, तो 50 के अगर आपको प्लानिंग करनी है तो सिस्टम क्या करेगा? उन 50 के हिसाब से चेक करेगा कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस यूज करनी है. वो उस यूज क्वांटिटी को क्या करेगा? इशू कर देगा. मतलब इशू मतलब हो गया आपके वेयर हाउस लोकेशन में से माइनस कर देगा और प्रोडक्शन एरिया की जो लोकेशन होगी वहां प्लस कर देगा. करेक्ट? करेक्ट. गिरिजा, अंडरस्टूड दैट? Yes, sir. Okay. So that is the meaning of backflush. Then comes the production area. Yeah, this is that meaning. I'm telling you this meaning. So this is the location for production area. This is the production area location, and this location here will be the location of the warehouse, the FG store. This should be changed. Let me change this location. This is always different than that. It's Kanban area. Okay. So this location 171AE is for production area location, and this is the FG store location. So where we create the material, that is an FG store or whatever the material. जैसे FG का बना रहे हैं material तो FG का लोकेशन डालेंगे, RM material बनाएंगे तो RM store का वैल्यू डालेंगे. तो this is how we enter the value. Okay. So अब इशू का मतलब क्या हुआ? That system will automatically do the backflushing, मतलब automatic withdrawal of goods. यहाँ पे जो 171A है ना, वहां से material माइनस कर देगा और 171E में प्लस कर देगा the quantity like that. That is the meaning of 171A और 171E. और backflush का मतलब क्या होता है? I hope this was clear. Good. Guys, allow me a second. Let me put my laptop in charge.
Yeah, okay. Thank you. Okay. So now this is that location. Then, अच्छा, in case of RM and PM, यहाँ पे location हमने क्या डाली? This location is production area. Similar way, अगर आप कोई material procure कर रहे हो, so आप procure करके किस location पे procure करके रखना चाहते हो? Like initially, तो जब भी हम अपन good receipt करते हैं, जो भी material से vendor आता है, truck वगैरह आती है vendor से, तो कोई ना कोई area होता है ना जहाँ पे हम basically उस material को पहले like unload करते हैं, and then हम अपने FG store में quality होने के बाद store करते हैं, right? जनरली ये होता है ना, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली आरएम स्टोर या फिर पैकेजिंग स्टोर में चला जाता है मटेरियल, नहीं नहीं जाता sir, ना। नहीं sir. नहीं sir. So here we enter that value that once we procure the material from any vendor, so where initially we will like keep it. So default store location for external procurement. So it could be some location which we randomly create, like maybe some random like dating or something, some area, the quarantine area basically, where we unload the point material, then we do the quality check of the raw material, packaging material, and after the quality check, if everything is acceptable or passed, then we put that material into warehouse or store location. Correct? So this is that location. So this is used again in the case of RM and PM because some material procure करते हैं, RM and material packaging material भी procure. And this is used in the case of which FGSFG, or even though this is also used in this is common field. This field is used in even RM as well. Why? Because once you will do the backflush, right? तो system क्या करेगा, यहाँ से RM store उठाएगा, RM location की storage, and यहाँ production store कि भाई ये particular RM material we issue of 10, like suppose 10 kg quantity from this location to this location. That's why we do that. So in this field we can give for both the things. But in case of FG or SFG, we give only this production area location. In case of RM and PM, we give both the locations. Okay. So my meaning. Yeah. Okay. Next is, so suppose if we have some co-product, what is the co-product and byproduct, guys? What do you mean by co-product and byproduct? Rajesh. Co-product is something coming out as a second product along with the original product. Okay, good. And what is byproduct? Byproduct is you can say, yes, the scrap generation is a byproduct. Correct. Good, kind of. Okay. So you cannot say scrap, but yeah, kind of, the last part of it. So what is left, basically, that is kind of, byproduct. Okay. So, okay, let me explain again. So co-product means that, once you do the production of like suppose you want to produce ghee. Okay. For ghee, what is your raw material? भाई घी बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल अपना, दूध, राइट? दूध से बेसिकली उसको आप जैसे वो जो भी आपकी प्रोसेस होती है 3-4 यार, बीच में आप मक्खन बनाते हो, देन मक्खन, ओके, मक्खन इज बेसिकली, तो पहले मक्खन बनता है, मक्खन को फिर ओवन में प्रोसेस दैट, देन घी भी बनता है, ऐसा कुछ तो होता है, समथिंग दिस प्रोसेस दैट बिटवीन, राइट? सो दिस प्रोसेस लाइक इन बिटवीन, अगर मक्खन बटर इज मैन्युफैक्चरिंग इन बिटवीन, सो बटर इज अ को प्रोडक्ट एंड घी इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो घी बनने के बाद में इफ यू एवर सीन द घी मैन्युफैक्चरिंग इन योर मे बी इन योर होम समवेयर इफ दे डू इट, और अगर आपने कहीं पे भी देखा होगा, so ghee बनने के बाद में भी something is left over, some leftover is there, so which Rajesh said in the scrap kind of thing. So that also for some companies, वो भी कुछ ना कुछ कंपनीज ऐसी है जो खरीदती है उसको, so उन कंपनीज के लिए बाय प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं अपन. मतलब बाय प्रोडक्ट भी सेल होता है, को प्रोडक्ट भी सेल होता है. मक्खन तो बिकता है राइट, बटर, अमूल बटर एंड ऑल भी मिलता है ना, बटर वगैरह, तो बटर इज द को प्रोडक्ट. तो बटर ऐसा नहीं है कि जनरली हर कंपनी बटर बनाती है, तो घी बनाने वाली कंपनी बटर बनाती है, राइट? जिस तरह से अमूल है, तो अमूल वगैरह क्या है, अमूल एक ऐसी चीज है जो घी भी बनाती है, दूध भी बनाती है, बटर, हर चीज बनाती है, वो प्रॉपर बना के देती है. भाई कुछ दिन नो इट कि मुझे एंड ऑफ द डे बनाना क्या है, घी बनाना है. और वो दूध भी सेल करते हैं, मतलब दूध इज रॉ मटेरियल फॉर देम, तो दूध भी सेल करते हैं, बटर भी सेल करते हैं, इवन बटर मिल्क भी सेल करते हैं, और घी भी सेल करते हैं. एवरीथिंग दे सेल इट बिकॉज दे नो इट दैट इफ दे वांट टू प्रोड्यूस इट, एवरीथिंग इज सेलेबल फॉर देम. They do not, they use everything whatever they have. So once they want to produce ghee out of the milk, so they start using the milk, they process it in proper stages. So during the stage, one of the stages the butter will be created. So that time, if they don't want to go with the ghee production, they can sell the butter. And then further, if they want to produce ghee, then they use the butter, they process it, they make a ghee.
That's how it is. So this is the example of co-product and byproduct. So if you want to create a metal master or co-product, so आप उसको यहाँ पे टिक करना पड़ता है आपको. You have to उसको आपको समझाना पड़ेगा मटेरियल को कि भाई ये नॉर्मल मटेरियल नहीं है. This is FG only, but this is a co-product material. Okay, so this is the tick जहाँ से सिस्टम को समझ में आता है कि co-product है. Okay. Okay. Next is सेल्यूलिंग. तो इसमें क्या आता है, ये क्या चीज है, यहाँ पे सिस्टम को ये समझ में आता है कि अच्छा किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, जैसा कोई मटेरियल हमारा ये मटेरियल सपोज पैरासिटामोल है या बटर एनीथिंग है, अमूल बटर है यार, तो बटर को बनाने के लिए हाउ मच डेज इट विल टेक, इन जनरल कितना टाइम लग जाता है. तो हमें पता है कि इन जनरल इट नीड्स एटलीस्ट 1 डे या एटलीस्ट 2 days और 3 days, जो भी है डिपेंड करता है कंपनी पे, कौन सी कंपनी पे क्या प्रोडक्ट बना रहे हो आप. तो बेस्ड ऑन द लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स की कहाँ पे क्या बन रहा है. तो दैट दिस इज बेसिकली द इन हाउस प्रोडक्शन डेज, कि किसी मटेरियल को प्रोड्यूस करने में कितने दिन लग रहे हैं आपको. एंड दिस वी कैन गिव ओनली इन डेज ओनली. एज यू कैन सी डेज इज लाइक फिक्स वैल्यू हियर. सो दिस वैल्यू 2 means 2 days, 5 means 5 days, like that. And this is in the case of FG and SFG. जो भी मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए भी गिव दिस वैल्यू. इफ दिस मटेरियल वुड हैव बीन RM और PM, यहाँ पे हम इसी वैल्यू देते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि वेंडर से जो मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं, वो तो वेंडर से माल यहाँ पर रिसीव होने में कितने दिन लगेंगे. Generally in your in our companies it happens like generally we have 30 days or 60 days or 90 days in general, या 45 days. तो 30 45 days or 60 to 90 days in general ये टाइम फ्रेम होता है. करेक्ट Yes, sir. राजेश, गिरिजा? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. या so these are for different purposes. like जो मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, in this case this field is used. जो मटेरियल प्रोक्योर करते हैं उस मटेरियल के लिए ये फील्ड यूज होती है. we cannot use the both the thing at the same time. That's a very simple logic. But this field is used for both. If you use this here, like suppose 5 days in production, so you will have to use this field. But if you use this one, like not this one, and if you use this one, like suppose 30 days to procure it, then also you will use this one. Let's understand the meaning of this field. So the meaning of this field is that once you procure the material, you do the good receipt. What do you mean by good receipt, guys? Good receipt means that we are receiving the goods in our company. अब it could happen here either from vendor, कि जिस वेंडर से हमने प्रोक्योर किया है वो मटेरियल में, अगर मटेरियल उसका मटेरियल उसके ट्रक जो हमारी कंपनी में अगर एंटर हो रहा है, सो वी विल रिसीव द गुड्स. अच्छा हाउ मच वी हैव रिसीव्ड, we'll check, we'll receive it, we'll unload it, and then we'll do the quality check, and then we'll store it in our RM store or in packaging store. So this is the good receipt. So अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको कि ट्रक आया, then you unloaded it, after unload you checked it physically, then it went through the quality process, then quality accepted it, then it went to RM store, then we placed in RM store. So this complete process, this 5 steps, this takes time. This is not an easy thing, right? So it could take 2 days, it could take 5 days. It depends on the labor and all these things, or how much time quality is taking, how much time labor is taking to place it somewhere in a warehouse or somewhere, everything. So it could happen. It could happen like depending on the quality or even the quantity. That if you procure only 100 materials, it will not take much time. If you procure 1 lakh quantity, it will take a lot of time to procure it, to place it in warehouse, to do the quality check and all. So that this varies actually and based on that. So suppose in general we take 5 days supposed to produce, to do the GR and to do the quality and then store it in a warehouse. So that days we give here. So ये दोनों चीज में काम आती है. दोनों चीज में कैसा आता है, प्रोडक्शन होने के बाद में भी प्रोडक्शन एरिया से आप मटेरियल वापस FG स्टोर में रखते हो, राइट? सो दैट स्टोर में रखने से पहले उसकी क्वालिटी चेक भी होती है. सिमिलर वे जैसे RM और PM मटेरियल व्हेन वी प्रोक्योर इट, हम क्या करते हैं, उसको अनलोड करते हैं, चेक करते हैं, क्वालिटी में जाता है, सब कुछ होता है, उसके बाद वो वेयरहाउस RM स्टोर में जाएगा. सिमिलर वे FG से बन जाता है, फिनिश गुड जब रेडी हो जाता है, फिनिश गुड बनने के बाद में वो प्रोडक्शन एरिया में रेडी होता है. प्रोडक्शन एरिया बनने के बाद में भी जो भी मटेरियल है इस जगह पे स्टोर करते हैं. पहले अगर हमने 1000 क्वांटिटी बनाए, 1000 टैबलेट्स बनाई है, 1000 आइसक्रीम बनाई, तो 1000 क्वांटिटी हमने कहीं पे स्टोर की. पहले स्टोर करने के बाद में जब पूरा 1000 क्वांटिटी बन गई मेरी, तब हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे. क्वालिटी चेक करने के बाद में वेयरहाउस FG स्टोर में जाएगा. तो सिमिलर वे इसका FG और RM का अलग अलग चीज है, तो दोनों के लिए ये सेम प्रोसेस है. That's why for FG it could vary days, for RM it could vary the days. So this is basically the combination of that. So meaning समझ में आया guys? What is the meaning of GR processing time? The days it takes to do the quality and to place the material in your respective warehouse. दोनों की डेज को कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आती है, दैट वैल्यू इज इन GR processing time. Okay? Good. ये रहा वो प्लानिंग कैलेंडर. यहाँ पे डालते हैं प्लानिंग कैलेंडर अगेन. यहाँ पे भी डाल सकते हैं, मतलब और MRP 1 में डाल सकते हैं यहाँ. तो प्लानिंग कैलेंडर साइकिल सेम थिंग बेसिकली. ओके,
Good. Then, okay, this is done. Okay, what is safety stock? Guys, what is safety stock? Safety stock means the stock which we want to keep in our warehouse as in safety during the emergency cases. That's the safety stock. Like you don't want system to use. Minimum हाँ stock. जी। Minimum stock to be maintained. हाँ वही मतलब कि कितना स्टॉक हम अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं एज एन मिनिमम स्टॉक कितना रखना चाहते हैं हम जिसके बाद हम प्रोक्योर करेंगे वापस कि भाई अगर सेफ्टी स्टॉक मेरा 1000 है तो 1000 पीस हमारे पास रहेंगे तो हम वापस प्रोक्योरमेंट कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल खाली नहीं कर सकते ना अपने स्टोर में वेयरहाउस वगैरह अगर कुछ इमरजेंसी ऑर्डर है कुछ आ गया या कुछ With अगर कुछ 10% हड़ताल or वगैरह हो गई 20%. जो भी है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू मटेरियल So we can use it in every aspect, na? Like for production, we can use it like against defect. For procurement, we Against? can use it like in terms of production. If we talk about safety stuff for production, we can use it there as well, na? Against the defect rate. Let's say the defect rate 3 to 4%. So we can keep the material of safety stuff of 3 to 4% so that we can like close our open POs. Yeah, exactly. It depends basically. Yeah, this could be a very good example. So it all depends actually, है ना, where and how we are using that. What based on what requirement, है ना? ठीक है, then let's start from tomorrow. Then again on or maybe next lecture on MRP 3, 4 and work scheduling view. So we'll cover that in the next lecture and then we'll start the next masters. Sir, what about recording, sir? Recording यार नहीं दिख रहा है आज. अभी yesterday की recordings नहीं मिली थी. मैं बोल देता हूँ. मैं एक बार ग्रुप में भी बोल देता हूँ. और जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है सैप का जो आपने एक्सेस दिया था ना सैप के लिए वो. ये राजू भाई हो गया. हेलो हो गया. हाँ राजू हो भाई गया हो सब गया. शायद सबका हो गया राइट. भागवत एरिक सबका हो हाँ गया. हो गया सर हो गया. बस नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं आई है. अभी मैं बात करता हूँ राजू भाई से. हाँ एक बार आप बात करो नहीं तो ग्रुप में एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना प्लीज है ना. ओके सर ओके. ठीक है. Okay then guys, I hope and make sure guys please remember that अभी जो भी हमने पढ़ा अभी तक make sure to do the practice of that and go through the lectures again once it will be uploaded on Drive and read it again because these are very important things guys. The masters are always important. That's why I'm taking some a lot of time just for the masters guys because once masters are done then most of the things are done. Then only we need to run the process. Process में ज़्यादा time नहीं लगता है. मास्टर्स में एक बार आप रिवीजन भी ले लीजिए सर. ये कभी कभी लगता है फास्ट हो Bhagwat, रहा है. I'm already going very slow. ओके. Better that नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप बता देना पूछ लेना मैं आई विल डू दैट. बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लेक्चर्स हमारे पास है ना so once we go through the lectures of course you have recording lectures of that so once you want sir, to go through it again you can watch the recordings once again. हाँ जी राजू. ओके ओके सर मास्टर होने के बाद कुछ हमको प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ दोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. और मास्टर होने के बाद यार प्रैक्टिस राजू आप खुद करो प्रैक्टिस. पता क्या करना देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे सपोज करो आप अपनी कंपनी का एनीवन फॉर एवरीवन दिस इज फॉर एवरीवन ओके. आप अपनी कंपनी का एवरीवन वर्क्स इन एन कंपनी राइट. आप अपनी कंपनी का कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है पूरा. क्या हुआ कोई भी प्रोडक्ट उठाओ उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जान पहचान लो कि अच्छा ये प्रोडक्ट की इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है. सॉरी नहीं सर ऑफिस में. हाँ तो कोई भी प्रोडक्ट है आप उसका उठाओ उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो कि अच्छा प्रोडक्ट का नाम क्या है उसको कैसे मेजर करते हैं उसकी एमआरपी में कैसे कैसे होता है या आपकी कंपनी वैसे जो आपकी एमएसपी है वहाँ से उसकी डील उठाओ वैसा प्रोडक्ट आपकी खुद बनाओ. देन उसके बाद हम जब बॉम्ब बनाएंगे तो उसका बॉम्ब बनाओ राउटिंग बनाओ सब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो साथ साथ में. लाइक गाइस राजू और एवरीवन आपको प्रैक्टिस साथ साथ में ही करनी पड़ेगी. बॉम्ब राउटिंग आता है सर बस मास्टर में थोड़ा इशू है. मास्टर डेटा मेटल मास्टर क्या. यस सर. मेटल मास्टर का टेंशन मत लो यार. मेटल मास्टर आप बनाते हैं अपन नहीं बनाते हैं वो मेटल मास्टर एमएम वाले बनाते हैं. सो डोंट वरी अबाउट मेटल मास्टर व्हाट. सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बिल ऑफ मटेरियल राउटिंग प्रोडक्शन वर्जन एंड वर्क सेंटर ये 4 मास्टर एज प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके है ना. ओके गाइस देन थैंक यू एंड मेक श्योर इस वीक में हमने जो भी पढ़ा है नेक्स्ट वीक से पहले यू हैव 7 days गाइस to repeat and revise everything. I can ask the same thing again in between next lecture. So make sure that we go through the whatever we read and then complete this revision. And if you have questions,
Note it down in your diary or somewhere. Once we go take the next lecture, ask me. Okay? Okay, okay. Good night, sir. Yeah. Okay, good night. Bye bye. Take care. Good night. Okay, good night.